केते नंबर पेज तला 189 हैं 189 the PLSQL record structure field declaration the field एठी आमे जेमति जानि छे जे कॉलम जो डिक्लेयर करा हुए ताको हमें फील्ड बोली कहू एठी भी समिति हमरो फील्ड डिक्लेरेशन मोर हुए फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3 तिनटा फील्ड से डिक्लेयर करछ एंड तार डाटा टाइप भी मेंशन करछ जेमति एठी तळे से एग्जांपल देछ एम्प्लॉय आईडी तार डाटा टाइप लास्ट नेम तार डाटा टाइप जॉब आईडी तार डाटा टाइप देन तार वैल्यू से रहे एटा होची रेकॉर्ड स्ट्रक्चर हला yes sir PLSQL record structure fields in a record are assessed with the name of the record to reference or initialize an individual field. Use the dot notation. Record name, record underscore name, dot field name. For example, you reference the job ID field in the employee underscore record as follows: employee underscore record dot job ID. You can then assign a value to the record field employee underscore record dot job ID equal to the value that you pass. In a block of subprogram, user defined record are initiated when you enter the block or subprogram. The cases to exit when you exit the block or subprogram, right? जेबे तम रेकॉर्ड बेस स्ट्रक्चर तम इंडिकेट करिवो सेताले तमे रेकॉर्ड नेम माने तमरो टेबल कॉलम नेम देन फील्ड नेम तम पास करिवो देन ता भितरे तमरो वैल्यू ता तम पास करिवो जदी ताले सी जेतले शो करिवो तुमको रो फॉर्मेट रे से शो करिवो विथ द कॉलम एंड तारा डाटा टाइप मेंशन yes sir Percentile row type attribute declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix percentile row type with the database table or view. Fields in the record take their names and data types from the column of the table or view. View माने view गोटे structure एमिति जोथरे कि तम रिक्वायरमेंट अनुसार तमे डाटा टाकू टेबल भितरु व्यू करते सेटा कोन जे धर मोर टेबल रे मोर अछि 50000 डाटा अछि तो मते जो डाटा टाक मु रिट्रीव करबी सेटा सेइथरे मु 50000 डाटा मु रखिया पे चाहू मोर ओरिजिनल डाटाबेस 50000 अछि डाटा अछि दैट ओके बट मु जेता देखिया पे चाहू छी मु केवल मोर मझी पोर्शन या फिर मोर फर्स्ट 10 टा डाटा मु देखिया पे चाहू छी या फिर मझी पोर्शन रो मु डाटा मु देखिया पे चाहू छी in that case तमे यूज कर परिबो व्यू तमरो बेसिकली तमरो कांसेप्ट आसी तमरो घर रो विंडो हो राइट किबा तमरो डोर हो सेठू तमरो कांसेप्ट आसी कारण तमे जदी घर भीतर अछि तमरो झरकार जेति की शेप अछि सेति से अनुसार तमे दूररू बाहर दुनिया देखि पारे हमें नो जे तमरो शेप रे जेति की तमे विजुअलाइज करि पाछो सेति की ही बाहर दुनिया आहुरी भी अछि बट पूरा दुनिया देखिबा अपेक्षा तम शेप अनुसार जेति की तमरो व्यू विजुअलाइज होचे तमे सेति की तमे देखि पाछ बुझला तो सेटा तम ले तमे इंडिकेट करि परिबो विजुअलाइज व्यू हिसाब रे तमे इंडिकेट कर the syntax is declare identify reference percentile row type. You learn that percentile type is used to declare a variable of the column type. The variable has the same data type and size as the table column. The benefit of percentile type is that you do not have to change the variable if the column is altered. Also, if the variable is a number and is used in any calculation, you need not worry about this precision. The percentile row type attribute is used to declare a record that can hold an entire row of table or view. The field in the record take their names and data types from the column of the table or view. The record can also store an entire row of the data fetched from a cursor or cursor variable.
The slide show the syntax for declaring a record. The syntax is identify. Identify means what? Is the name chosen for the record as a whole. Reference is the name of the table, view, cursor or cursor variable on which the record is to be based. The table or view must exist for this reference to be valid. In the following example, a record is declared using the percentage row type as a data type specified. Declare employee record, employees percentage row type. Bujla? Yes, sir. The employee record has the structure consisting of the following fields, each representing of columns in the employee table. Note that this is not code, but simple the structure of the composite variable, employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, salary, commission, protect, manager ID, department ID, and taro data type more so mentioned. To reference an individual field, use the dot notation, record name, dot field name. For example, you reference a commission packet from a field in the employee record as follows: employee record dot commission packet. You can then assign a value to the record field, employee record dot commission packet equal to 35. तमे ताकू sorry 0.35. तो तमे जेतले रिप्रेजेंट करिवो फील्ड को जेतले रिप्रेजेंट करिवो सही रेकॉर्ड रो ना देन फील्ड नेम तमे डॉट नोटेशन थ्रू तमे रिप्रेजेंट कर परिबो एंड सेथरे मु तमे वैल्यू भी पास कर परिबो बुझला. Yes, sir. Assigning value to record, you can assign a list of common value to a record by using the select or fetched statement. Make sure that the column names appear in the same order as the field in your record. You can also assign one record to another. If both have the same corresponding data types, a record type of employees percentile row type and a user-defined record type having analogs field of the employees table will have the same data type. Therefore, if a user-defined record contains fields similar to the field of a percentile row type record, you can assign that user-defined record to the percentile row type record. Creating PLSQL record example, declare type T underscore record is record. Field name and data type, right? And say default value be say V underscore salary, V underscore minimum salary number, that default value is 1000, right? So तुम्हारा किसी value में जब pass ना को से default value की ही ना. V hire date employees dot hire date personnel type. V recall employees dot personnel row type. Then V underscore my record. T underscore record begin V underscore my record dot V underscore salary more record name then field name equal to तारा value से pass कला value रे मु either मु value pass करूँ या फिर calculation मु requirement अनुसार मु बात कर परी then सेमेती V underscore my record dot V underscore hire date equal to C state तापर से दला they select into select star into V underscore my record dot V underscore record one from employee where employee ID equal to 100. जार employee ID तमरा 100 थी वो तारा तमरा V underscore my record sorry V underscore recall को retrieve करिबो employee table and सेटा store करियो मोर variable भीतर, right? Yes, sir. The fields declaration used to, in defining a record are like variable declaration. Each field has a unique name and a specific data type. There are no predefined data type for PLSQL record as there are for scalar variable. Therefore, you must create the record type first and then declare and identify using that type. In the example in the slide, a PLSQL record is created using the required two-step process. A record type T underscore record is defined. A record V underscore my record of the T underscore record type is declared. Note that the record contains 4 fields: V underscore salary,
minimum salary, high date, and character. V underscore recall is defined using the percentile row type attribute, which is similar to the percentile type attribute. With the percentile type, a field inherit the data type of the specified column. With percentile row type, a field inherit the column name and data type of columns in the reference table. PLSQL record field are referenced using the record dot field name notation or the record dot field name dot column name notation for the field that are defined with the percentile row type attribute. You can add the not null constraint to any field declaration to prevent assigning nulls to that field. Remember that the field that are declared as not null must be initialized. Advantage of using the percentile row type attribute: the number and data type of the underlying database column need not be known, and in fact might change at runtime. The percentile row type attribute is useful when you want to retrieve a row with the select asterisk statement, row label insert and update statement. Advantage description. The advantage of using the percentile row type attribute are listed in the slide. Use the percentile row type attribute when you are not sure about the structure of the underlying database table. The main advantage of using the percentile row type is that it simplifies maintenance. Using percentile row type ensure that the data type of the variable declared with this attribute changes dynamically when the underlying table is altered. If a DDL statement changes the column in a table, the PLSQL program unit is invalidated. When the program is recompiled, it automatically reflects the new table format. The percentile row type attribute is particularly useful when you want to retrieve an entire row from a table. In the absence of the attribute of this attribute, you would be forced to declare a variable which each of the column retrieved by the select statement. Percentile row type percentile row type या फिर percentile attribute नहीं जाओ. Percentile attribute and percentile row type भितर difference कौन? Percentile attribute रे तमरो कोनोसी data type जतल तम variable declare करछो से variable भितर कोनोसी data type न mention करी की से variable भितर value pass करिबा सही type रो value pass करिबा को represent करिया पे मोर percentile attribute मोर use करा. Percentile row type कौन? गोटे नॉर्मल वेरिएबल तुम जतले डिक्लेयर करूछो सेता बेले से वेरिएबल रे गोटे टाइम रे गोटे वैल्यू तुम पास करतो. एबे जदी गोटे रो रो वैल्यू जदी मते रिप्रेजेंट करबा को पड़िबो या फिर गोटे रो रो वैल्यू जदी मते एक्सट्रैक्ट करके शो करबा को पड़िबो, इन दैट केस रे तमरो परसेंटाइल रो टाइप तमरो यूज करा जाय. सिंपल बुझला. Enter the percentile row type attribute. For example, declare v underscore employee underscore number equal to 124, v underscore employee underscore record, employees percentile row type. Begin select asterisk into column name dala v underscore employee underscore record. Then form employee v underscore employee underscore record ta hochi tamaro variable name for the percentile row type. Form employees where employee ID equal to v underscore employee underscore number. V underscore employee underscore number कौन अच्छी 124 अच्छी, right? एबे 124 को बेस करी की employee table रे जेते सबु रो अच्छी 124 को बेस करी धरा मु कहबी जे जार employee ID 124 अच्छी तार सब तक वैल्यू मते शो कर. तो एठी employee ID मोर रिपीटेड तो हबन, राइट? employee ID जे मो धर तमे मु गोटे जगह रे काम करछे तो मोर एम्प्लॉय आईडी जहा तो तमरो एम्प्लॉय आईडी ता हबन. मोर धर एम्प्लॉय आईडी होची 124. तमे देखिया पे चाहछो जे मोर एंटायर इंफॉर्मेशन माने एंटायर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन तमे देखिया पे चाहछो तो तमे कोन करिवो. नॉर्मल एसक्यूएल ले हमें कोन करे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 124 एया नॉर्मल स्टेप. एबे पीएल जेतु हमें यूज करूचे तो हमें तो डायरेक्ट तो शो कर परिबानी. हमें ताकू गोटे से जो वैल्यू टा जो रिट्रीव करिवो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज करी की
आमे जो वैल्यू टा को रिट्रीव करबा सेटा गोटे वेरिएबल भीतर स्टोर कर रखिबा एबे से वेरिएबल भीतर भाबिबार अछि जे मु नॉर्मल स्केलर वेरिएबल मु डिक्लेयर कर परबी नै वन मु जदि आस्ट्रिक माने कोन ऑल तो 124 जहार एम्प्लॉय आईडी अछि तार सबुतक कॉलम रो वैल्यू मते शो करबो एबे मो स्केलर वेरिएबल जो डिक्लेयर करबी सेटा तो मोर पॉसिबल नुवा जे मोर एंटायर रो टाकू मते रिट्रीव करी ता भीतर रखिया पे तो मते गोटे एमिति गोटे पोर्शन दरकार एमिति गोटे सर्कमस्टेंस दरकार जे कि जो रोटा मोर एक्सट्रैक्ट हबो से निज भीतर स्टोर कर रखबे एंड से वेरिएबल टाकू पर ताकू शो करले मते एंटायर रोटा शो से Yes, sir. सर्कमस्टेंस ता से जो प्लेटफॉर्म ता प्रोवाइड करे पर्सनल रो टाइप तो सेति पय एठी से डिक्लेयर कला गोटे वेरिएबल v_employee_record एज ए एम्प्लॉय टेबल रो पर्सनल रो टाइप से डिक्लेयर ता पूर्वरु गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला जोथे कि से 124 वैल्यू से देछि एबे सिलेक्ट आस्ट्रिक इनटू एम्प्लॉय टेबल रो सबुत कॉलम को रिट्रीव करबो एंड एई वेरिएबल ले मोर स्टोर करिक रखिबो ऑन द बेसिस ऑफ जहार एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू v_employee_ number इट मींस कोन जे 124 राइट देन Yes, sir. insert into retired employees employee number name e-name job manager height date leave date salary commission department number तापर से वैल्यू टा पास कर तो एटा मोर जो इंसर्ट करबो प्रथमे रिट्रीव करबो देन से इंसर्ट करबो तो सेठी जो मोर वैल्यू टा आसी देखो मोर से वैल्यू रिट्रीव करी मत शो कर बुझला Yes, sir. Another example of the personnel row type attribute is shown in the slide. For an employee is retiring, information about that employee is added to a table that hold information about retired employee. The user supplies the employee number. The record of the employee specified by the user is retrieved from the employees table and stored in the employee record variable, which is declared using the personnel row type attribute. To create statement that create the retired underscore employee table is create table record underscore employee. Then ता भीतर मोर कॉलम रहला employee number, job, height, date, salary, department number. तार data type रहला और mention कराई जी. Note that the record that is inserted into the height date retired underscore employee table is shown in the slide. To see the output shown in the slide, place your cursor on the select statement at the bottom of the code, example in the SQL developer, and press F9. The complete code example of found in code _6_14 .SQL passage सेटा मते describe कराइछ. Inserting a record by using the personnel row type, it has a value pass kala same jinso insert into it is select karibo then say insert karibo. Bujhla? Yes, sir. Compare the insert statement in the previous slide with the insert statement in this slide. Employee record is of type record retired underscore employee. The number of field in the record must be equal to the number of field names into class. You can use this record to insert value into a table. This makes the code more readable. Examine the select statement in the slide. You select hire date twice and insert the hire date value in the leave date field of retired underscore employee. No employee retired on the hire date. The inserted record is shown in the slide. You will see how to operate this in the next slide. Note that to see the output shown in the slide, please place your cursor on the select statement at the bottom of the code. For example, SQL developer and press it as a SQL developer platform. Press F9 colors. Yes, sir. Updating row in a table by using a record. Set verify off declare. Eta verify off declare. Dida variable declare color. Would say employee number and would employee record.
retired underscore employee percentile row type. Begin. Select asterisk into v underscore employee underscore record from the retired employees table ru Sikankala jaro employee record dot leave date equal to current date. Current date माने आजिका date रे जो तमरो employee record से leave करछि तारो सब तक डाटा को retrieve करिवो and सेटा store करिवो मोर एई variable ले से store करिवो. Yes, sir. से अपडेट करछि update retired underscore employee set row equal to v underscore employee underscore record where employee number equal to v underscore employee underscore number. It means कौन ए जो वैल्यू टा को जो वैल्यू मोर एग्जीक्यूट करिवो करंट डेट रे जो एग्जीक्यूट करिवो जो रो टा आसीबो सेटा मोर कोठी आसीबो एइथरे स्टोर हला एबे ता सी एबे सेही रो रे अपडेट करिवो तो अपडेट करिवो तो एंटायर रो रो वैल्यू टा को तो अपडेट करिवो मु पर्टिकुलर सेल रो वैल्यू टा को अपडेट करिवो तो सी कोन कला अपडेट रिटायर्ड एम्प्लॉय सेट रो equal to v underscore employee underscore record v माने ए वेरिएबल जो मोर वैल्यू अछि where employee number equal to v underscore employee underscore number जहार 124 जहार अछि ता सेही रो रे मोर ए वैल्यू टा मोर अपडेट करि दो बुझला. Yes, sir. Updating a row in a table by using a record. You learn to insert a row by using a record. This slide shows you how to update a row by using a record. The row keyword is used to represent the entire row. The code shows in the slide. Update the leave date of the employee. The record is update as shown in the slide. Note that to see the output shown in the slide, place your cursor on the select statement at the bottom of the code. Example SQL developer, press F9. Yes, sir. इटा में काली स्टार्ट करिवा शुभश्री. Yes, sir. 197. Thank you, sir.